guys, after Bamboo Island, our next point was Monkey Beach. So this is the Monkey Beach. As you can see that it's so beautiful, and we had a stop of 15 minutes on this beach. तो गाइस, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो मंकी बीच पे, तो मतलब अगर बैग्स वगैरह आप लोग को अंदर ही रख के जाना पड़ता है, मतलब बोट पे, क्योंकि जो मंकी है वो उसको लगता है कि खाना है इसके अंदर, तो वो पूरा बैग उठा के ले जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप आपका बैग ना ले जाए। ऐसे तो आपको बता देंगे बोट वाले भैया। एंड बस यहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, अगर आप चाहो तो स्विम कर सकते हो, स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, पर हम लोग का ऑलरेडी हो गया तो हम शायद नहीं करेंगे अभी। We also saw the Viking cave on our way to the Phi Phi Lagoon. So our next point is Phi Phi Lagoon, and as you can see that how beautiful, how gorgeous the view is. So here we had a stop of 20 minutes for swimming. This is the beautiful place where one can take a lot of pictures and videos on the boat, because this place is surrounded by beautiful mountains that pictures comes out so super and nice. As you can see that how I'm enjoying in this video, and we really had a great time here, but sadly we had only 20 minutes here. However, in less time too, we enjoyed a lot. After Phi Phi Lagoon, our next point was Maya Bay. फाइनली हम लोग अभी माया बे पहुंच गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से, मतलब ये बैक साइड है माया बे का। तो यहाँ से भी हम लोग जाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। So this is the back side of the Maya Bay, and as you can see, boat will drop you here, and from here you have to go by walk. This is the bridge you have to cross. It will take around 10 to 15 minutes to reach Maya Bay, because as you can see that there is a lot of rush here. Like almost all the tourists usually come here, and for this you have to pay 400 baht additionally, because that is the charges of the national park. At the Maya Bay, we were given 1 hour to spend here. There are some rules and regulations at the Maya Bay, like one cannot swim or go deep into the water. One must have to pay 5 to 10,000 baht for the violation of the national park. So whenever you are coming, do not break the rules. हम जा रहे हैं। यहाँ पर टॉयलेट भी होता है, तो यू कैन चेंज एंड फ्रेशन अप हियर इफ़ यू विश टू। सो क्योंकि काफ़ी टाइम से आप बोट में रहते हो, तो यू डेफिनेटली नीड अ वॉशरूम और रेस्ट रूम। So as you can see that we are about to reach at the beach, and this is the most beautiful part of the Phi Phi Island. And also because of the over tourism, it was closed in 2018, and recently it got opened. To keep it clean and to give it some time to recover, that's why the rules has to be followed. तो अभी हम लोग थोड़ा चिल्ड आउट कर रहे हैं। आज हम सुबह से उठे हुए हैं, तो हम थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा, एंड स्नॉर्कलिंग वगैरह भी करी हम लोगों ने, तो उसमें तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ हमारी पूरी बॉडी पे टैन हो गया है पूरा। इसके बाद 7:30 तक पहुंच जाएंगे, एंड देन फिर थोड़ा रेस्ट करके विल डू सम डिनर विनर, एंड कल हम लोग कराबी के लिए निकल रहे हैं। तो हम लोग की फेरी रहेगी 10:30 पे इन द मॉर्निंग। सो उसके लिए फिर जल्दी उठना है, थोड़ा पैकिंग करनी है। So our last point of the day tour was the sunset viewpoint. And believe me guys, when we reached at this point, I had no words
for this feeling. I mean, I had the tears of joy when we were at this location. We spent almost 20 to 25 minutes here till the sunset. The view was so breathtaking. I mean, it was so gorgeous. Like, I can say that some moments are seriously priceless that you cannot describe in words. And this is how we ended our day. सो गाइज़ आज हम लोग की एनिवर्सरी है एंड अभी मैंने उनको कुछ खाना लेने के लिए भेजा है। मैं कुछ बलून्स वगैरह घर से लेकर आई थी तो मैं फटाफट डेकोरेशन कर देती हूँ यहाँ पर। सो आई एम गोइंग टू सरप्राइज हिम। So here you can see that how fast I am decorating because I had only 20 minutes to complete the decoration and surprising. डेकोरेट तो कर दिया। आई होप उन्हें अच्छा लगे। ही विल बी कमिंग बैक इन 5 to 10 minutes। तब तक मैं थोड़ी बाकी सफाई कर लेती हूँ एंड आई गेट रेडी। सो यस, बाय बाय। This was the beautiful day of my life. Like, it was our 8th anniversary and I couldn't have a more beautiful day in my life than this day. So I hope you guys will like this video. If you do so, then please make sure to like it, and if you're new to my channel, then make sure to subscribe it. I will see you in the next video. Until then, take care and bye bye.